Yes, sir. All right. Previous classes we have seen this wave nature of matter. That is, according to de Broglie, moving particle will produce the wave. Its wavelength is given by h upon pm. H is the Planck constant, p is the momentum, which is mv. And if we put the value of p in terms of k, we can write momentum is equal to under root of 2m and in case of charged particle, ke will be q into v, where v is the potential difference. In case of thermal neutron, ke will be 3 by 2 kBt is the Boltzmann constant, T is the absolute temperature. So kinetic energy will be put here, 2 will get cancelled. तो ये भी हो सकता है. तो based on this, we did this question. Other questions also. Now we'll do this question. Find the de Broglie wavelength of electron ejected from the metal plate of negligible work function if wavelength of incident radiation is lambda. तो वर्क फंक्शन तो 0 है, नेग्लिजिबल है, और ये लैम्डा वेवलेंथ का फोटोन मेटल प्लेट पे पड़ा, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी वेवलेंथ निकालनी है. दैट्स de Broglie wavelength of इलेक्ट्रॉन निकालनी है. How to get this de Broglie wavelength of electron? De Broglie wavelength of electron will be h upon 2m km. के निकाल सकते हैं. के की वैल्यू आइंस्टाइन इक्वेशन निकाल के पुट कर दो इसमें. के मैक्स इज हाउ मच? HF minus work function. HF की जगह c by lambda आ जाएगा. वर्क फंक्शन इज नेग्लिजिबल, तो ये पुट कर दो. के मैक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो. h को भी रूट के अंदर ले लो, तो ये h स्क्वायर हो जाएगा. के मैक्स इज hc by लैम्डा. लैम्डा ऊपर आ जाएगा. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, ऊपर h एंड लैम्डा बचेगा, डिवाइड बाय 2m into c. This is the answer. This is not board examination, CBSE board examination question. So do it carefully. यहाँ पर lambda dash या lambda e लेना पड़ेगा, because this lambda is given. Don't do it like this. यहाँ भी lambda नहीं लेना, फिर आप confusion होगा. यहाँ भी lambda, यहाँ भी. Either you take it lambda dash or lambda e लेना. Clear? समझ में आ गया ये आपको? This is good question. Combination of both the topics, de Broglie wavelength and your Einstein's photoelectric effect equation.
अगर वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल नहीं होता तो यहाँ भी एक टर्म आ जाता। Clear to everyone? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's see a few more questions. What about this question? Particle of mass m at rest decays into two particles of mass m1, m2 having non-zero velocities. The ratio of de Broglie wavelength of the particles lambda1 by lambda2 will be how much? Law of conservation of momentum. Initial momentum is equal to final momentum. Initially 0 है, final will be P1 plus P2. P1 is equal to minus P2 और P1 का mod will be P2 है ना, मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल है, mod of P1 is equal to mod of P2 है ना. Now lambda1 by lambda2 will be H upon P1 P2 P1 के बराबर ही है, तो 1:1 रेशियो, C ऑप्शन. Clear to everyone? Yes, sir. Only thing, one will be going this side, other will go this side, but wavelength, de Broglie wavelength will be equal. Momentums are not equal, magnitudes are equal because they are going in opposite direction. So wavelength is a scalar quantity, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? Got it? Yes, sir. All right. This is also frequently asked question. Photon has kinetic energy E is equal to 100 keV, which is equal to that of photon. The wavelength of photon is lambda2 and that of proton is lambda1. The ratio of lambda2 by lambda1 is proportional to. दोनों की एनर्जी इक्वल है, मीन्स एक की काइनेटिक एनर्जी दूसरे की एनर्जी बोथ आर इक्वल. तो एनर्जी का फार्मूला क्या, फोटोन की एनर्जी का फार्मूला क्या है, बोलो. फॉर फोटोन, फोटोन का पहले लिख रहे हैं, lambda2 पहले लिख रहे हैं. फॉर फोटोन HF.
HF, तो F is equal to C by lambda. लैम्डा के टर्म में लैम्डा 2 दिया है ना? That's inversely proportional to E. तो उसकी तो inversely proportional to E आ गई फोटोन की. For proton की एनर्जी एंड वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन होगा. टू एम के का सिंबल ही लिखना है यहाँ पे. ऊपर एच हो गया. ठीक है. एच अपॉन पी विच इज 2m के का सिंबल ई लिखना है यहाँ पर. क्लियर. तो दिस इज नथिंग बट ए ऐसा डिवाइड कर दो. वन दिस इज 2. ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. अलर्ट. इफ यू मेक इट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन कर दे. Here, in case of proton, if you make it electron, will there be any change in the answer? No, because we are writing answer in directly proportional. यहाँ पे देखो proportional to. So one particle is photon, one is photon, other can be any particle answer which remains same. Because for particle energy is in under root, kinetic energy is in under root, or for photon it is what is called without root, both are in denominator. The answer will be like this. If but only thing they may ask you lambda 1 by lambda 2, then it becomes e to the power half. If we change the sequence lambda 1 by lambda 2 कर दे तो e to the power half. ठीक है. lambda 2 by lambda 1 e to the power minus half because denominator में e है. Clear? Yes, sir. So this is frequently asked question, particularly in competitive examination, but in boards also it can be their objective. Now de Broglie wavelength of electron. Electron standard value calculate कर लेते because we know these are the constants. अगर हम de Broglie wavelength, if electron is accelerated by the potential difference of v, तो नीचे q into v,
Q की जगह E लिखेंगे, ये लास्ट वाला जो रिलेशन था, है ना, डी ब्रॉगली का. Can you see this one? For electron, here mass of electron will come, here charge of electron will come. माइनस नहीं लिखना उसमें, क्योंकि ये भी अकॉर्डिंग टू दैट माइनस होगा ना, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिखा जाता है. तो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स एंड सिंप्लीफाई फर्दर, यहाँ पे ये लिख देंगे, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एच बी कांस्टेंट, टू बी कांस्टेंट. Putting all the values of constants, what we get is 1.227 upon root of V. V is the potential difference in volt. ऊपर नैनोमीटर है. अपने केमिस्ट्री में भी ये पढ़ा है, शायद केमिस्ट्री में देखो ये 150 डिवाइड बाई V A नॉट होता है ना, इसकी वैल्यू. तो रूट से बाहर आएगा 12.27 A नॉट बाई रूट V, और इसको नैनोमीटर में लिखना है तो एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, इधर 1.227 हो जाएगा. ऐसे था केमिस्ट्री में. सेम थिंग इज हियर, सेम थिंग इज हियर. In terms of nanometer, it will be 1.227. In terms of A naught, it will be 12.22, 12.27 हो जाएगा. So both the things are same. It's given in nanometer in NCERT book, therefore. ठीक है. For example, difference of 120 volt, right? Lambda will be 0.112 nanometer, which is of the same order as the spacing between the atomic planes in the crystals. Therefore, matter wave associated with the electron could be verified in the crystal diffraction experiment. Crystal diffraction experiment होता है, तो उससे matter wave of electron can be checked, can be verified. क्योंकि because इसकी जो wavelength है same is the order of their atomic spacing, atomic planes की spacing. तो डिफ्रैक्शन पैटर्न हो सकता है, बिकॉज डिफ्रैक्शन पैटर्न में गैप जो है इट शुड बी ऑफ ऑर्डर ऑफ, it should be of order of wavelength of radiation. So things can be checked whether waves are really produced by the electron. Yes, it can be checked. So this is a standard relation you have to remember for Numericals point of view. Let's see the numerical of textbook. ये सॉल्व एग्जांपल ले सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है. देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन 100, तो यहाँ पे 100 पुट कर दो, रूट के अंदर 100 है, इट विल बिकम 10 एंड डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा. तो कंटिन्यूअस नंबर आ गया. देखो, राउंड ऑफ कर दो, 7 हटा के 3 कर दो फ्रेंड नंबर, तो 0.123 नैनोमीटर. इसको कंटिन्यूअस नंबर भी लिख सकते हैं, 1.23. 7 अगर लास्ट डिजिट हटाना है, राउंड ऑफ करना है. गॉट इट. तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर द फार्मूला. ऑलराइट.
Okay, I'm audible now. Yes, sir. Okay. Okay, what was going on? This question was going on? Or before that? No, sir, this question was going on. Was going on same question, eh? Yes, sir. Okay. So we saw this one. De Broglie wavelength of electron. After that, I explained you this spacing between the atomic planes is of same order. Therefore, this diffraction can be checked. Wavelength is this, which is of the same order of spacing between the atomic planes in the crystal. Therefore, matter wave associated with the electron could be verified by the crystal diffraction, because condition for the diffraction is that that spacing slit width should be of order of the wavelength of the light or radiation. Therefore, this can be used. And also this question, potential difference was 100. Put the value here in the formula. So you'll get 0.125, 0.123 nanometer, or in terms of angstrom, it will be 1.23. The de Broglie wavelength associated with an electron in this case is of order of X-rays wavelength. Electron की जो wavelength है, it is quite a low value, which is happen to be equal to the wavelength of X-rays. Therefore, if we use the electrons in the microscope, if we use the wavelength of electron in microscope, its resolving power will be very high. Resolving power क्या होती है? Resolving power is inversely proportional to lambda. If lambda goes down, wavelength resolving power goes up of the instrument. So it can give you very clear image of the very small objects. So electron microscopes are there. Electron microscopes are used for the high resolution qualities. You can see images available on the YouTube taken by the electron microscope. Amazing pictures you can see. High result, very high resolving power, which is inversely proportional to wavelength. तो normal microscope में हम लोग केवल what we call it light लेते, which is wavelength is much greater than this wavelength. Light की कितनी होती है? 400 nanometer to 700 nanometer. But this is much smaller than that. Therefore, electron microscopes have very large, very large resolving power. Resolving power deals with the clear image. Magnifying power deals with the bigger image. Got it? Yes, sir. Okay. So ये देखो ये question है, show that question number 18, show that wavelength of electromagnetic radiation is equal to the de Broglie wavelength of the quantum photons. किसकी चाहिए हमें? Wavelength of electromagnetic waves, electromagnetic radiation. So lambda is equal to C upon F होता है ना? और हमें लाना क्या है? H upon P लाना है ना? अभी क्या करेंगे इसमें? देखो कैसे लाएंगे बोलो? How to bring
हाउ टू ब्रिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ h अपॉन लैम्डा लेना है। क्या करना चाहिए अभी? h से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाइंग बाय h डिवाइडिंग बाय h, तो ये हो जाएगा आपका CH अपॉन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, HF है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, ये H एंड F हो गया, तो ये आपका हो गया C अपॉन E H। तो यहाँ पे देखो H अपॉन E by C, E by C is nothing but a momentum of photon beginning में पढ़ा था हमने, beginning of this chapter, कल हमने रिवाइज भी किया था। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट ए डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और ये रेडिएशन की वेवलेंथ थी। गॉट इट? Yes, sir. That's how you can do it. Okay. All right. देखो एक क्वेश्चन ये भी है, ऑफ कोर्स इसमें 11th का थोड़ा पूछा है। What are the de Broglie wavelength of nitrogen molecules in air at 300 Kelvin? तो de Broglie wavelength का फॉर्मूला h अपॉन m भी रहेगा, बट v यहाँ पे उन्होंने बोला क्या लेना है, RMS वेलोसिटी लेना है। Assume that molecule is moving with the RMS velocity of molecule at the temperature and its atomic mass is given. तो RMS velocity is root of 3RT, ये RMS velocity लेना है बोला उन्होंने, but RMS velocity is given by root 3 RT upon molar mass। तो T is the temperature दिया है आपको 300, R is 8.314, molar mass will be 14 ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो इन्होंने एटॉमिक मास दिया है, तो molar mass will be 14 ग्राम, that will be 14 into 10 to the power minus 3। मोलर मास को हमें केजी में पुट करना है, 14 into 10 to the power minus 3 kg। आर कितना होता है, 8.314, 8.3 ले सकते हैं, की डायरेक्टली दिया हुआ 300 केल्विन। यहाँ से आरएमएस स्पीड निकाल के इसमें पुट कर सकते, कैलकुलेशंस आर लेंदी, बट यू आर सपोज्ड टू नो द प्रॉपर मेथड। ऑलराइट, यहाँ से यू में आंसर, ये तो एटॉमिक मास दिया, मास ऑफ द एटम दिया हुआ, दैट आल्सो इन एएमयू। एएमयू कितना होता है, 1.66 into 10 to the power minus 30 minus 27। इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी फिर एटॉमिक मास में लाना पड़ेगा, है ना। तो यू कैन डू इट, इसमें कुछ ऐसा है कि एटॉमिक मास में 3 kBT अपॉन m
atomic mass. Then you can put kb की value नहीं दी है ना वो, that you have to remember constant are given in beginning. So you can just revise those who are going for competitive examination. Generally, they may not ask in the board examination of something that is in the 11th standard. Generally, they avoid to ask. But फिर भी you can just revise the notes of kinetic theory of gases. What about this question? Solid example. Particle is moving 3 times as fast as the electron. The ratio of de Broglie wavelength is given. Calculate the particle's mass and identify the particle. V1. कौन सा फार्मूला? V1 particle is moving. Particle को V1 लेते हैं, 3 times faster of electron. Electron को V2 लेते हैं ना. The ratio of de Broglie wavelength of particle, lambda 1 by lambda 2 is 1.813 into 10 to the power minus 4. Calculate the particle's mass. M1 निकालना है. Which formula? H upon mv वाला. H upon mv. तो H तो कैंसिल होगा. नीचे M1 V1, ऊपर M2 V2. If you put the value, okay. हमें क्या निकालना है? Particle's mass. M1 निकालना है ना. M2 इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा ना. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो पुट कर सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है. V2 by V1 कितना है बोलिए. 1/3. और लैम्डा 1 by lambda 2. ये भी नीचे आ रहा है क्या? How much this is coming? देखते हैं solution. 1.67 into 10 to the power minus 27 आ रहा है क्या? How it is? अच्छा ये भी तो रहेगा ना. ये आपका रहेगा 9.1 into 10 to the power. इलेक्ट्रॉन का मास पुट कर दो. कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास? 9.1 into 10 raised to minus 31. if you solve it, 1.67 into 10 to the power minus 27 is coming kg में. That is kilo. That is the mass of the proton or neutron. दोनों के मास almost same होते हैं. Therefore, it is mass of proton or neutron. Very close. So that is, it can be proton or neutron. ठीक है? Got it or not? So solid example Yes, है. Just you can have the practice. Sometimes they are asking in the board examination. So you should have this practice also. They are easy questions. Question number 6, then solid example of chapter 11.
This experiment is deleted in the course. Last experiment था ये Davison and German experiment. So just I am telling you कि what did this prove? This experiment proved the wave nature of electron. उन्होंने wave nature electron को prove करके दिखाया. De Broglie was the one who gave the concept of wave nature, but later on these scientists could prove the wave nature of electron. They could find the wave of moving electron in their experiment using the different potential differences and angle of scattering वगैरह use करके उन्होंने एक sudden peak मिलती है. Sudden peak is obtained in the constructive interference. Constructive interference किस में होता है? Wave में होता है. Certain voltage पर और एक certain potential difference पर and एक certain angle पर उनको sudden peak मिल रही थी. Sudden increase in the intensity. So sudden increase in the intensity is possible in constructive interference of between the waves. ऐसा हमने देखा था wave interference में like this variation of intensity. Sudden peak is due to constructive interference. तो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन की वेव्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन के पास वेव्स होंगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे. So that's how they proved it. With the other method also, that one of the logic was given this and one more. So they proved the wave nature, but this is not in course. So now it is in deleted part. Now we are moving on to the next chapter called atoms. So this just let me